Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. We have started the kinetics of surface catalyzed reactions. पहले तो हमने दो कंडीशन डिस्कस करने हैं, वो हम कर चुके हैं कि whether a reaction is in diffusion control region or in kinetic control region. For study of true kinetics, a reaction must be in kinetic control regions. So let us consider a simple example: unimolecular gas phase reactions. Consider a simple unimolecular gas phase reactions. That is, reactant R goes to the product at the surface of the catalyst. So as we studied in the last video, in the last lecture, that surface catalyzed reaction can be broken down into 5 steps. The first step is the transport of the reactant to the surface of the catalyst. So first step is the reactant in the gas phase, it moves towards the surface of the catalyst, transport. And in the second step, when they reach to the surface of the catalyst, it is get absorbed. So in दोनों स्टेप को हम एक ही रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That is the diffusion transport of the reactant to the surface of catalyst, and then it absorbed at the surface of the catalyst. तो दो स्टेप उसमें से हो गए. तीसरे स्टेप में फिर ये 1 और 2 हो. थर्ड स्टेप में when the reactant is absorbed at the surface of the catalyst, then it react and gives the product. Reactant in adsorbed form gives the product in adsorbed form. Let's suppose Kr is the rate constant for this step. Kr is rate constant. In the fourth step and final and 5 steps, the product adsorbed, it is desorbed and then move away to gaseous phase. So ये 5 steps. Reaction can be broken down into these 5 steps as we studied earlier. The first step is the transport of the reactant to the surface of the catalyst. Let's suppose ये surface catalyst है और ये हमारे पास reactant R है. So first it moves towards the surface of the catalyst, a reversible process. When it reaches, it's adsorbed. And in third step, when the reactant adsorbed, it gives the product. Then it gives the product, which is also in adsorbed form. Let's suppose this is the product. And finally, the desorptions and transportation of the product away from the surface of the catalyst. So this is the whole process. It can be broken down into 5 steps. So as we assumed that the reaction is free from any mass transfer limitation conditions, so it means that the rate determining step is either adsorption or reactions or desorptions. And step 2, 3 or 4 ये chemical step है. इनमें से एक ने slow step होना है. Generally, this adsorption and desorptions, these are fast step. So these are not the rate determining step. The rate determining step is the true chemical reactions. This is rate determining steps. So rate determining step अगर ये है, then the rate of reactions is proportional to concentration of the reactants adsorbed in adsorbed form. Rate of reactions is proportional to concentration or pressure of the reactants in adsorbed form. अब adsorbed form में concentration को कैसे find out करेंगे? The concentration of the reactants in adsorbed form is usually expressed in terms of fractional surface coverage. कितना surface coverage catalyst ने cover किया है? The concentration of reactants, concentration or pressure of reactant is expressed in terms of
surface coverage. Surface coverage को 3 तरह से represent करते हैं. So let's suppose surface of the catalyst covered, fraction of the surface of the catalyst covered by R is theta R. And this is related, this is proportional to concentration of the reactant. Hence, the rate of reaction becomes rate is proportional to theta R. R rate is equal to KR and theta R. अब theta R fractional surface coverage, इसको कैसे find out करेंगे? Surface coverage is expressed or determined in terms of adsorption isotherms. It is expressed in terms of adsorption isotherms. There are different types of adsorption isotherms we have studied earlier. For example, Freundlich है, Temkin है, Langmuir है, BET है, DR है. Different adsorption isotherms are used. Freundlich, Langmuir, Temkin, BET, DR, BJH, and so on. Commonly used adsorption isotherm is the Langmuir adsorption isotherm. क्योंकि हमने simple से start करना है, so first we consider the Langmuir adsorption isotherms. So considering the Langmuir adsorption isotherms, we can express the surface coverage. So Langmuir adsorption isotherms we have studied earlier is equal to BPR 1 plus B and PR, where B is the adsorption equilibrium constant and PR is the pressure of the reactant R. So considering theta, this is theta R, the rate of reaction becomes rate is equal to KR or BPR divided by 1 plus B and PR. So this is the rate expression for surface catalyzed reactions. There are different cases whether the adsorption is weak, moderate, or strong. So nature of adsorption of the reactant R strongly affect the kinetics of the reactions. Nature of adsorption highly affect the kinetics. नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या मतलब, यानी वीक एड्सॉर्प्ट है, वीकली एड्सॉर्प्शन है, और स्ट्रांगली एड्सॉर्प्शन है. गैस इज स्ट्रांगली एड्सॉर्प्ड or it is moderately adsorbed. So under these conditions the kinetics of the reaction would be different. So nature of adsorption affect the kinetics of the reactions. So first we consider the weak adsorptions. Case number 1, weak adsorptions. Weak adsorption means the value of adsorption equilibrium constant B is very small as compared to 1. तो अगर B की वैल्यू स्मॉल है और जब इस B को प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, any very small value multiplied to any value becomes further smaller. So it means BP would be much smaller than 1. So 1 plus BP would be taken as equal to 1. यानी BP इसको हम इग्नोर कर सकते हैं डिनोमिनेटर में. हमारे पास रेट इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू KR B PR and 1 plus B PR. This is the rate expression. So denominator में हमारे पास दो terms हैं. This B is very small. So when a small value is multiplied with another, so it becomes further smaller. So therefore this
terms is very small as compared to 1, so it is ignored. This term is ignored, then it becomes as 1. So we get rate is equal to KR, B and PR. अब यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, इन दो कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट ले लेते हैं, KAP and PR, where KAP it is called apparent rate constant. Apparent rate constant. यानी रेट कांस्टेंट नहीं है लेकिन अपेरेंट रेट कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ एक और कांस्टेंट बी मल्टीप्लाइड फॉर्म में ट्रू रेट कांस्टेंट के आर है। इस के आर के साथ बी को भी मल्टीप्लाई किया है तो इट बिकम्स एन अपेरेंट रेट कांस्टेंट। तो अब इस रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस डी पी आर डिवाइडेड बाई डी टी, इट इज रेट ऑफ रिएक्शंस। माइनस साइन इसलिए यूज़ करते हैं कि प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस करना है डी पी ऑफ पी तो फिर ये पॉजिटिव साइन में क्या के साथ होगा, एंड के ए पी और पी आर। ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है फॉर सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस व्हेन अ गैस इज वीकली एब्सॉर्ब्ड। So this is a simple first order equations. Rearrange करते हैं dPr divided by PR and KAP and dt. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं dPr divided by PR and KAP and dt. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पहले भी पढ़ चुके हैं, इट बिकम्स log ऑफ माइनस log ऑफ पी आर इज इक्वल टू के ए पी टी एंड प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस बाउंड्री कंडीशंस क्या मतलब, when t is equal to 0 PR pressure of R is PI initial pressure. So under these conditions we get minus log PI is equal to KAP or 0 and constant. So constant is equal to minus log of PI. तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज लगा लेते हैं, ये इस इक्वेशन में लगा लेते हैं, then we get minus log PR is equal to KAPT और minus log PI। इसको इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा log PI minus log PR। अब ये PR, this is the pressure at different time interval. In this equation, it is the pressure of the reactant at different time interval. So we can also write as PT at different time is equal to KAP and T or log PI divided by PT is equal to KAP and T. So this is a simple first order equation. अगर प्लॉट करते हैं वर्सेस T वर्सेस log PI over PT, we get a straight line जिसका स्लोप बराबर होगा K apparent। इसी तरह अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हमने प्रेशर को देखना है कि वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा PI डिवाइडेड बाई PT और एक्सपोनेंट KAP एंड T। इन्वर्ट करते हैं PT डिवाइडेड बाई PI और एक्सपोनेंट माइनस KAP एंड T। इस PI को दूसरी तरफ ले आते हैं, सो PT इज इक्वल टू PI और एक्सपोनेंट माइनस KAP एंड T। So this equation gives the variation of pressure
of the reactant with time. So this is an exponential expressions. अगर इसको हम प्लॉट करते हैं t versus pt, then we get such type of a curve. यहाँ पर ये pi है और p at different time interval. So it means that when the absorption is weak, then the reaction is first order, simple first order equation. The surface catalyzed reactions of a single unimolecular reaction would be a first order. It will follow the first order kinetics. दूसरी condition, if strongly adsorbed हो, strongly adsorbed के लिए B is greater than 1. So BP would be much greater than 1. So therefore, in equations, rate is equal to Kr B PR and 1 plus B PR. इस केस में डिनोमिनेटर में इस B PR को इग्नोर कर लेते हैं. 1 B PR would be equal to B and PR, because this term is much higher than 1. So rate is equal to Kr BP and BP. R rate is equal to Kr, that is constant. So rate become constant. So it means the reaction is zero order. Minus dPr divided by dt is equal to Kr. R dPr is equal to Kr and dt. इंटीग्रेट करते हैं, माइनस dPr Kr and dt. इससे क्या होगा? It becomes equal to minus Pa, इसका इंटीग्रल minus P at different time interval and Kap and T plus constant. अब कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं. When T is equal to 0, P is equal to Pi, PR is equal to Pi, और डिफरेंट टाइम पर PR फिर PT है. So minus PT is equal to Kap plus ये 0 and constant, ये हो जाएगा Pi. So constant is equal to minus Pi. तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू लगा लेते हैं. Then we get minus Pt is equal to Kap और T और प्लस कांस्टेंट की जगह पर माइनस Pi. इस माइनस Pi को इधर ले आते हैं, तो ऐसा भी ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. सो Pt इज इक्वल टू ये हो जाएगा Pi और माइनस Kap. So this is a straight line equation for zero order reactions. अगर हम T versus PR को ले लेते हैं, PT को different time interval पर लेते हैं, and we get a straight line with negative slope. This is Pi, and इसका slope वो है Kap, zero order rate constant. So for strongly adsorptions the reaction is zero order. अगर moderate हो, moderate adsorptions, for moderate adsorptions reaction would be the order of reactions is in between 0 to 1. That is, it is either 0.1, 0.2, 0.3 up to 0.9 fractional order. So it means that the nature of adsorption affect the kinetics of the surface catalyzed reactions. Whether it would be a first order equations, it follow is zero order kinetics,
or fractional order kinetics. So it can be concluded that for weak adsorptions, kinetics reaction kinetics is first order. For strong adsorptions, reaction kinetics is zero order. Or for moderate adsorptions, it is fractional order, 0.1 से लेकर 0.9 तक. ये तो सिंपल यूनिमॉलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शन के लिए. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फिर कंडीशन डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं.